So we're going to start with Schrodinger equation. Schrodinger equation, the way we know. In your earlier classes you studied equation of motion, है ना? That's known as Newton's laws of motion. या इसी की higher form है Lagrange equation of motion or Hamiltonian equation. So these are equations of motion. How a particle moves under influence of a force. Now here we are not considering हमारा जो idea है, it's not point particle. It has been replaced fundamentally by something called psi, evolution of wave function, psi in space and time. है ना? So today we are going to have a study of how that sign, उसका evolution in space time क्या होगा. That's also called formally as Schrodinger equation. अब Schrodinger equation में दो हैं, either it's time independent or it's time dependent. ठीक है? So we are going to have, so we'll say इसका हम we'll take the analogy as if we are studying the wave equation for free particle motion. So it's not a particle in the classical sense. So it's not a particle in the classical sense. हमने कहा था एक वेव पैकेट है, उसका स्प्रेड आता है. Sometimes the wave packet का spread is concentrated in the sense of nodes and antinodes. It assumes as if it behaves like a particle. Got my point? So it's not that as if. So we are going to try to understand wave equation. So it's going to have how this evolution of psi, इसका जो wave equation है, उसका solution क्या आएगा in space time. So that's the thing. So it will be sort of linear partial differential equation. Means it will be one variable, two variables, three variables. So the point is that what we are going to do is, so हमारे पास if you remember we had an equation psi of x जो हमारे पास थी. So it should satisfy this equation. What was it? If you remember, it was in Fourier modes or in Fourier representation how the evolution of k dot minus omega t d3k. In Fourier space, psi and phi the evolution. Basically, it's what ये क्या है? It's over iota kx. It's basically cos x plus iota sin x. Cos x भी होगी cos में, sin x होगी. So we are representing this psi in terms of a complex wave, which is having this transformation. And this integration हमने इसलिए किया था because there is a Fourier transformation. How we can add up waves together? This is general procedure. So we should be able to, जो हमारे पास जो wave packet है, उसका solution should satisfy this wave equation. It's being integrated. All sorts of waves are coming. They are continuously superposing. है ना? At some superpositions, it will have an analogy the way nodes and antinodes are forming. In the same way, wave packets का spread होता है, where the interference is maximum. So it will be as if the particle is there. It's not particle, it's wave spread. The collective superposition of those things. तो उसी का solution हमको निकालना. So it's represented mathematically by this Fourier transform. अगर आप ऐसे है, then what we are going to do? We are going to say that this should have an linear partial differential equation का solution. So to admit this, if you remember last time हमने निकाला था जो energy of states निकाला था h omega, it came out to be this. So where E is equivalent to, so energy and इसका आया था when we tried to solve it last thing. So if we do the same thing here, we can also write it for h omega t. It's the energy. We can write it energy in terms of frequency and Planck's constant of that wave which was previously we arrived at it last expression. So this is k है, it's propagation.
K is propagation. K is 2 pi by lambda. अब lambda K can be Kx, Ky and Kz. Can be lambda by lambda. ठीक है? Propagation along x, propagation along y, propagation along ये क्या है? तो you can represent it by h square by 2m. So we can write it k modulus in terms of kx square plus ky square plus kz square. So kx square plus ky square plus kz square plus v. Now we are coming back to how did we represent psi. Psi को हमने ऐसे represent किया था. Psi of if you see, if you remember, psi को हमने ऐसे represent किया था. Psi को हमने represent किया था ऐसे. In terms of wave function, psi is equal to psi of x of t is equal to e to the power iota k dot r minus omega t. So it's basically psi is what? It's evolution of wave function, which is given by k is the propagation, omega is the. अब इसी वेव इक्वेशन का एवोल्यूशन डी साई बाई डी टी, जिस तरह आप करते हैं ना फर्स्ट लॉ में, है ना, एफ इज इक्वल टू एम ई. व्हाट्स दैट? इट्स आल्सो बेसिकली व्हाट एम ई इज व्हाट? इट्स एम डी टू एक्स बाई. इट्स आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या गेट इट, ये आएगा c1 आएगा. अगेन यू डिफरेंशिएट इट, यू गेट c1 plus. So this is what? It's an equation of motion, second order differential equation. You start from acceleration, you integrate it, you can reach at velocity and you can reach at displacement. These C1, C2 are the initial conditions. If the body has started from at rest, then C1 is 0 or C1 plus C2 is. If they have not started from origin rest, so you can these are boundary variable. So in the same way, it's also a differential equation. इसका solution हम निकालते हैं. So you can integrate it. If the body starts from x, you give initial conditions, आप उसकी velocity बता सकते हो, then you can go for acceleration. So in the same way, here it's not x. Here what is it? It's basically psi. Psi का evolution in space time. ठीक है? Which is an exponential complex wave. ठीक है? So we have to see d psi by dt क्या आएगा, and then we have to see इसका substitution in terms of this energy and potential energy. We are going to substitute it here. ठीक है? So it is a very simple exercise what we are going to do. So what we are going to do it, अगर आप इसको एक बार differentiation करेंगे, so it will be, so it is basically psi of r t. So we take r can be x y z. ठीक है? So we are taking the general function r. So if you only want to say its propagation along x direction only, then take d x by dt, d psi y by. So here we are taking general space में कैसे इसका evolution होगा. तो d psi by d और t क्या आएगा? So it will be basically what? ये बाहर निकलेगा ना ओमेगा, है ना, d psi by dt है ना, तो वापस आएगा e to the power iota k dot r minus omega t. And you simply differentiate it. हाँ minus t. So you can write it. अगर both sides में हम इसको we are going to, so in the same way d2 psi by so what we are going to do, we are going to multiply both sides by h. It's h. ठीक है? To absorb minus here we are going to multiply it by iota. Iota square को यहाँ से करेंगे, यहाँ iota square करेंगे तो it will be like this. ये will substitute. अब ये है this h square by 2m into kx square, ये आएगा ना. अब ये है एक तो हम d psi by dx, ये तो space derivative होगा. Now what we are going to do, we are going to इसका derivative with respect to r करेंगे. क्या आएगा? अगर हमारे पास खाली kx है तो एक बार आएगा kx बाहर, अगेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, तो फिर आएगा kx स्क्वायर. ठीक है? और ky स्क्वायर और
kz square. So you are going to write this very equation. So it's this. So left hand side में आप ऐसे लिखेंगे. It will be iota h d sine rt by dt, and right hand side में h square by 2m. So if you want to write it in terms of kx को in terms of लिखेंगे. Now again do the same thing, but we differentiate it with respect to r. So एक बार भी आएगा k बाहर वापस. Second time it will be kx square, such that we can write it as इस सब को psi rt plus b times psi of rt लिख सकते हैं कि नहीं? To do psi of rt के बजाय आप ये लिखो, है ना? If you write it यहाँ d psi by d r एक बार आएगा ये k बाहर निकलेगा, यह आएगा k डॉट r माइनस ओमेगा t एक्सपोनेंशियल ऑफ, तो इट विल बी k psi. अगेन यू डू वन थिंग, d2 psi by df स्क्वायर, तो ये आएगा k स्क्वायर psi. ठीक है, तो एक बार kx स्क्वायर से करेंगे, फिर ky स्क्वायर से करेंगे, फिर kz स्क्वायर से करेंगे. ठीक है, एडिंग द टू विल गेट दिस. ठीक है, so we have done nothing. We have, so we'll show, and this b को भी psi rt के साथ बाहर निकालेंगे. So this is in simplest sense the Schrodinger equation का form. So we have done nothing. इसी को हम कहते हैं, if you go to different books, इसी को हम कहते हैं time dependent Schrodinger equation. What is it called? Famous? Time dependent. So what we have done, we have taken time derivatives as well as space derivatives of this wave function psi. ठीक है, it assumes the form of this partial differential equation. Now, जिस तरह हम equation of motion में we start with this law and you can एक बार integrate करेंगे, you will get velocity. Again you are going to integrate, you will go displacement, है ना? You have different these equations of motion. What you a body starts from rest, what will be its motion after 5 minutes? V क्या आएगा, A क्या आएगा? So we do it. Now we have to do, this is our differential equation here. अब इसी के solutions हमको निकालना है ना? That will correspond to how evolution of psi, that wave packet जो space में है, इसका कहाँ पर कहाँ पहुँचेगी. ठीक है? So whole game of quantum mechanics is basically what? Solution of this Schrodinger. So it's a sort of partial differential equation. इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है, ये सेकंड ऑर्डर ये डिफरेंशियल इक्वेशन. इट्स अ partial differential equation in the sense that इसका solution x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है ना? We don't know wave function कैसे evolve कर सकता है. Normally it's very complicated that it will only involve in one dimension. Since continuously superpose हो रहा है ना, psi जो हो रहा है psi 1 plus psi 2, इनका सुपरपोज हो रहा है दो वेव्स का. अगर सिंपलेस्ट केस में 2 or more waves are continuously superposing. And then we are seeing इसका evolution क्या होगा, space time में कैसे evolve करेगा psi. So that assumes the form of this. So whole thing of quantum mechanics or whole thing is to have, now you have to actually solve it in this differential equation. Okay, so that's our job. So we are going to do the same thing in detail in the coming classes. But before we are going to do the same thing in detail, हम एक exercise करेंगे to show that this equation has some analogy or with the classical equations of motion, classical mechanics. ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या similarity है? This is the exercise we are going to do that thing. So for that, what we are going to do is that. तो we are going to write it एक इसी वेव psi फंक्शन को इन हम अल्टरनेटिव वेव में लिखेंगे. उसको psi को हम ऐसे लिखेंगे, psi rt is equal to e to the power iota I s rt by h. This x is normally called actual functional उसको कहते हैं. ठीक है, so we are not going to write psi in terms of this wave for. ठीक है, we are going to write k dot r minus omega t है ना, ये basically wave sort of cos. It's a complex wave, cos wave plus iota sine this.
Here k is propagation, omega is frequency. This is wave. अब इसको हम वेव फॉर्म में नहीं लिखेंगे, we are going to write this in terms of s. s बेसिकली वेरिएबल है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसको फंक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल का एवोल्यूशन कैसे होगा स्पेस टाइम, ठीक है। वी विल टॉक ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वेव। इवन वेव को भी हम कहेंगे पार्टिकल्स की इंडिविजुअल ऑसिलेशन दैट ट्रैवल्स। पार्टिकल्स विल इंडिविजुअली ऑसिलेट बट दैट डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स, उसको हम वेव कहते हैं। बट इन इट्स एनालिसिस वो भी पार्टिकल्स की मोशन होती है, ठीक है। सो पार्टिकल इज फंडामेंटल हियर, बट हियर पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल, इट्स सम नॉट डीप मिक्सचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव पार्टिकल्स, उसी को हम साई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उनका सुपरपोजिशन ऑफ दोज वेव्स, उसका वेव स्प्रेड हम निकालते हैं। अब व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, वी आर गोइंग टू मेक सम एनालॉजी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स विद द quantum mechanics. So we are going to write not psi like this, we are going to write psi like this. Here psi is a functional, so in classical mechanics language, maybe if you have not studied, you can go to any book on classical mechanics. इसको हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इक्वेशन 2.35 use the words of book, इसमें इसको रिप्रेजेंट किया 2.35 can be represented as, again we are going to do the same exercise. एक बार इसको डिफरेंशिएट करो ds d psi by dsr d psi by dt के साथ, तो इट विल बी दिस इक्वेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम डिफरेंशिएशन हियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। सो इट विल कम आउट टू बी, इफ यू डू अपनी जगह आप करना रफ में, और इट विल नॉट टेक मानो 2 सेकंड लगेंगे, dsr by dt प्लस इसको आप ये है ना ये, या इसी को यहाँ rather than substituting here you do it here, psi को यहाँ करो आप डिफरेंशिएट, d psi by dt क्या आएगा, d psi by dt r यहाँ करोगे, so it will प्लस यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, डेल स्क्वायर psi, डेल स्क्वायर ये 2 बार आएगा, एक बार, सो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। एक बार इसको स्क्वायर अपनी जगह ही रखो, इसी को डिफरेंशिएशन करो, इसको ऐसे ही रखो 2m, एंड द सेकंड टर्म विल बी आयोटा h। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आयोटा h बाहर निकलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर दैट्स -1 डिवाइडेड बाय दिस h divided by 2m del square upon SRT plus v अपना ये v, एंड बाहर इसके आएगा ये साइड को हम बाहर निकालेंगे, साइड को बाहर निकालेंगे, साइड इसकी भी e to the power आयोटा s, ये यहाँ आएगा ना d psi by dr आएगा, तो ये psi आएगा बाहर, तो psi को सब ब्रैकेट में बाहर निकालेंगे, इट विल बी psi or it will be e to the power iota psi or t by h. So I have done nothing. I have tried to substitute this value of psi in this partial differential equation. Okay, you do the rough at your place, so you can write it by rearranging the terms. You can write it like this. ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा, अब what we are saying that the function s or t is generally complex. Generally it's complex. ठीक है, यहाँ पर from this, but in certain cases it may be real. If you remember, हमने कहा था ना when we started the class, psi of x t. We sometimes said even though it's a real wave, but for if t is equal to 0 omega t, so we can take it as a real wave. Complex wave में जिसमें complex number में real numbers are always as part of it, ठीक है। So you can say that complex wave अगर है मगर some parts are the real only, ठीक है। So psi t is a general complex wave, but some cases it may be real and which might represent a plane wave. In that case SRT जो होगी h k dot r minus h omega t, ये है ना k dot r minus omega t,
सो अगर h को बाहर निकालेंगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो k डॉट r, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. 2 पाई बाई लैम्डा को आप लिखोगे h ओवर mv, है ना, mv बाई h. तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. mv के बदले आप लिखोगे मोमेंटम pv. ये हो गया h over 2 पर, ये कैंसिल हो जाएगा. यू कैन राइट इट k डॉट r, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज p डॉट r माइनस e इंटू p. सो वी हैव डन नथिंग. हमने k डॉट r को इधर तो p डॉट r लिखा, ओमेगा t को इधर तो एनर्जी दिस लिखा. So equation informs us that whenever and where the wave function psi does not vanish, the non-linear differential equation has the form ds r by dt. इसका फॉर्म आएगा प्लस सेकेंड टर्म वाली भी आएगी एंड दिस टर्म. तो ये कह रहा है कि कौन सा बटन, दिस वन, दिस p डॉट r इंटू ये हाँ k डॉट r माइनस है, माइनस ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी. अब ये कह रहा है व्हाट द थिंग सेज इज दैट so this equation must hold. What he wants to say is this, that if they are iota and h are the harmonics of, so if iota and h are negligible, they are negligible, so they will have the so ये जो इक्वेशन है ना, if you go to any book in classical mechanics, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्लासिकल हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन. हैमिल्टोनियन so the point is shown, अगर iota and h are small, ठीक है, if you go to any book on classical mechanics, जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लॉ को भी आगे आप लिखते हैं मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ लैग्रांज इक्वेशन मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह जैकोबियंस, ठीक है. सो दैट्स अ क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर वी टेक द पार्टिकल का इवोल्यूशन. But if you see, if iota and h are negligibly small, this has a, as if it's a shape representation, as if it's a wave equation. So इसका फॉर्म वही है जो wave equation है. Model of the factors iota and h are small. ये एक sort of resemblance हम दिखा रहे हैं, ठीक है, of classical equations of motion and quantum equations of motion. Even though ideas are maybe different in that sense. ये है, this is the point. And further ये है कि if we consider the motion of wave packet, if you remember हमने last time कहा था ना ऐसी, इसका we took wave spread का evolution at some x minus delta x and x plus delta x का लिया था हमने at some mean. So अगर हम ऐसे लेंगे where we had जो यहाँ हमारे पास ये equation थी ना, sin phi के दरमियान हमने एक फूरियर स्पेस लिया, एक प्रोपेगेशन वेक्टर फाई लिया था k एंड साई के दरमियान रिलेशन निकाला था. तो अगर अब हम ऐसे करेंगे काम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सॉरी, if you assume psi and phi are localized functions in k space means Fourier space, where phi and k can be somehow related. उसमें Fourier space में क्यों जाते हैं? We know there is a way, mathematical way to add waves, these superposed waves of different shapes. It's not necessarily they will be sinusoidal waves, ठीक है. All sorts of waves कैसे superpose कर सकते हैं, उनका integral sum कैसे निकालते हैं, that's a particular branch of mathematics. Fourier analysis को कहते हैं या वेवलेट थ्योरी उसको कहते हैं, ठीक है.
So that helps us in how we can see these superposed waves का evolution क्या है. अगर psi and phi are localized function in k space, so in one dimension, most popular prototype of अगर हम psi लेंगे psi wave function at time t is equal to z and momentum होगा इसका hk, तो psi evolution हमारे पास it will be sort of Gaussian wave. जिस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Gaussian wave का फंक्शन ऐसे होता है. So we can represent it like this: x minus x naught square, जो एवोल्यूशन ऑफ वेव अगर एट टाइम x t है, x 0 पे हम लेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ दिस वेव फंक्शन कैन बी लाइक दिस x minus x naught. You just first remember it. If you don't totally understand it, कैसे आ रहा है. The point is how evolution of wave packet कैसे आएगा space time. How we can pictorially see or map it on some graph. इस तरह आप करते हैं ना equation of motion, y and x velocity कहाँ से, यहाँ से y निकालते हैं, यहाँ से t निकालते हैं, ठीक है, फिर v निकालते हैं x by t, ठीक है, या y by t या z by t. In the same way यहाँ वहाँ x y z वहाँ particle था, यहाँ particle, यहाँ वेव स्टेट है psi है. अब psi कैसे इवॉल्व करेगी स्पेस टाइम, ये हमारा मकसद है. सो इन द सिंपलेस्ट केस इफ psi इज x एट सम एंड टाइम t, इसका फॉर्म आएगा एज सम दिस गॉसियन वेव पैकेट का फॉर्म आएगा, स्टेट ऐसे आएगा. सो kx, सो k बार इज सम मीन वैल्यू जो हमारे पास आएगा. अब ये हमने कैसे लाया, सो वी जस्ट सस्पेंड इट फॉर सम टाइम. Okay, we only say that the wave packet has an evolution like that of a Gaussian packet. उसका form ऐसे आएगा, ठीक है. So अगर हम so we want to show something. We want to, if we consider one dimensional wave packet which is represented by this action function, not this thing. Actually हमको equivalence show करनी है. So x0 by h, so it is represented by functional this. So we can also write it as, so this is sub for x minus x naught, इसको हम chi के साथ denote करेंगे, minus of chi of x plus iota k x x, where chi x is a smooth value. It can go from minus infinity to plus infinity, है ना. हम कहते हैं जब वेव वहां से आ रही है मींस इंफिनिटी, जब फोरियर इंटीग्रल नॉर्मल लेते थे ना यहाँ से माइनस इंफिनिटी प्लस, एंड ओपन एंडेड वेव विल कम हियर, इट्स गोइंग टू सुपरपोज, ये आगे भी इंफिनिटी जाएगी, ठीक है. सो इट्स एन ओपन एंडेड थिंग. इन द सेम वे अब अगर ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका है ना ये, बट इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e टू द पावर, क्योंकि इसका स्प्रेड है ना, ये जब ऐसे जाता है इंफिनिटी पे जाएगा ये इट विल श्रिंक, जितना जितना ऊपर जाएगा ये श्रिंक जाएगा. इसे इट विल स्टार्ट लाइक दिस. अब इसको बढ़ाओगे ना ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, सच दैट इट विल बी सॉर्ट ऑफ दैट फंक्शन ऐसे वेव स्प्रेड, ठीक है. सो इट विल बी सॉर्ट ऑफ दैट इन द सेंस. वही है हमारे पास डेल्टा k इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर इसका ब्रेड बढ़ाएंगे इसका लेंथ कम हो जाएगा. अगर इसको ऊपर जाएंगे यहां से, सच दैट डेल्टा k इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इफ यू मेक वन पोजीशन को हम प्रिसाइज करेंगे, मोमेंटम विल बी इम्प्रिसाइज. मोमेंटम इम्प्रिसाइज करेंगे, अगर ये इंफिनिटी हो जाएगा ये 0 हो जाएगा. अगर ये ऐसे करेंगे तो ये कम मोटा ज्यादा हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे. दिस इज हाउ वी कैन शो ग्राफिकली पोजीशन मोमेंटम रिलेशन एंड एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशंस लाइक दिस. तो इसमें हम व्हाट वी हैव टू रादर देन शो दिस थिंग, सो व्हाट वी आर गोइंग टू, इफ वी रिप्रेजेंट दिस psi लाइक दिस, तो एंड देन s of xt जो हमारे पास ये है, इसको इफ यू रिमेंबर हमने कहा yesterday we did it, वेव पैकेट का फर्स्ट टेलर सीरीज हमने निकाला था. फर्स्ट ऑर्डर चेंज क्या आएगा,
सेकेंड ऑर्डर चेंज क्या आएगी, हायर ऑर्डर चेंज क्या आएगी, के माइनस के नॉट, के माइनस के नॉट स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, के माइनस के नॉट 3 by हायर फैक्टोरियल. फिर हमने हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट किया था एंड वी गॉट द एक्सप्रेशन last time. So we are going to use the same expression here for this. We are not representing this psi, we are representing this wave function psi, but it's a construct, it's a variable taken from classical mechanics, not quantum mechanics. So if you take psi x, तो इसके जो variables आएंगे ओमेगा t आएगा, फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन आएगा ऐसे d ओमेगा by dt, फिर आएगा ऐसे आएगा k x बार x माइनस डी ओमेगा बाई डी के एक्स बार, इस तरह आयोटा काय आएगा x माइनस डी ओमेगा बाई डी के एक्स बार t. आप देखो अगर हम वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट सम हायर टर्म्स, तो ds बाई डी टी क्या आएगा, देखो ds बाई डी टी क्या आएगा शाबाश, dsx बाई डी टी. तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म क्या आएगी, t आएगा, t and d psi by dt, t will cancel, h आएगा यहाँ से, it will be h omega which is energy. In the same way, neglecting higher term, in the same way ds by dx क्या आएगा, तो ये देखो यहाँ kx है, x x कैंसिल हो जाएगा, kx आएगा, k h यहाँ जाएगा, others will cancel or will approximate it, we can write it as h kx or px. So we have ये ds by dx है, दूसरा है ds by dx will be h kx px. एक ये आएगा, the other will be this. So हमारे पास जो x फंक्शनल है, एक्शन फंक्शनल है, इसको हमने ट्रीट किया as if it's a wave packet in terms of particle, तो we want to make it equivalence. तो ds by dt ये आएगा, ds by dx ये आएगा, नेग्लेक्टिंग दीज थिंग्स इन दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ द वेव फंक्शन. अगर जो हमारे पास वेव पैकेट है, इसका इवोल्यूशन इन द स्पेस टाइम लाइक दैट ऑफ गॉसियन वेव पैकेट, ठीक है. अगर हमने ये किया, द थिंग इज दिस, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, द इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच कम्स आउट टू बी, so we'll see ds by dx comes out to be ds ये xt है, it comes out to be minus h omega is e, and ds by dt xt it comes out to be hkx is p. Now we are coming back to our original equation जो हमारे पास स्टार्ट की थी. स्टार्ट हमारे पास इक्वेशन थी दिस थिंग, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, टोटल एनर्जी है ना हमारे पास, इट्स पी स्क्वायर बाय एम, हाँ टोटल एनर्जी एच ओमेगा है ना, एच ओमेगा हमने कहा था इट्स एच स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m प्लस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी. तो अब यू कैन सी इट, दिस ds by dx है ना, इसका फॉर्म है e, एंड ds by dt का इसका फॉर्म है e. सो इट विल बी टोटल एनर्जी है ना ये, e के बदले में लिखोगे h ओमेगा, इट विल बी h ओमेगा के बदले आप लिखोगे, h ओमेगा के बदले आप लिखोगे ds by dx xt प्लस ये होगी एनर्जी, प्लस ये यहाँ माइनस आएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट्स पी स्क्वायर बाई टीएम 2m, पी स्क्वायर के बदले ये आप लिखोगे, पी के बदले आप लिखोगे ds बाई dt dx स्क्वायर. ये तो स्पेस डेरिवेटिव है, बट नाउ इट्स टाइम डेरिवेटिव. स्क्वायर अपना पी स्क्वायर का अपना स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू, सो इसी को हम कहते हैं सेमी क्लासिकल इक्वेशन बी, सेमी क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बी, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम कहते हैं. सो दिस शोज दैट इन दो वी हैव रिप्लेस्ड दिस psi
this in terms of this S. S is a variable or construction taken from classical mechanics. It's a classical. At the end, जो हमारे पास equation of motion आ गई, ये it represents Hamiltonian equation of motion. ये classical equation of motion है. So इसका वही form है जो Schrodinger equation का form है. So it's sort of at least some sort of, in some limited sense, we can say the classical equations of motions can have an analog in the quantum equations of motion. Even though जो psi as a wave packet है वो particle नहीं है, ठीक है? So ये है at the end. So our ideas about wave packets can be made quantitative and consistent with the laws of classical mechanics. So at least we can make them quantitative. Quantitative क्या? What do you mean quantitative? Now how they vary, how things vary. So F is equal to ma, है ना? F is not equal to m square a. कुछ और इक्वेशन होगा ना? या एम ए क्यूब होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? सो वी हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू. सो इट मेक्स इट, देयर वर्ड क्या इसने यूज किया है, इट मेक्स इट क्वांटिटेटिव and consistent. Consistent means that there is not a contradiction. So where classical equations of motion can have an analog, can be reduced to quantum equations of motion, or classical equations of motion can be limited cases of, क्योंकि quantum mechanics एक theory है, वो submicroscopic world है, but at the end classical mechanics should reduce to quantum mechanics. So in some limits it should agree with the classical mechanics, and in some other limits it should say something more about the nature or meanings. So the consistency part is where they should agree. Classical mechanics and quantum mechanics should agree. So it is shown by this analogy. ठीक है?